हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिलेक्ट स्टेटमेंट का सिंटेक्स पढ़ा था, आज हम उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। एक चीज़ हम फिर से बात कर लें कि सिलेक्ट स्टेटमेंट इज द ओनली स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द टेबल एंड डिस्प्ले दैट डेटा ऑन द स्क्रीन, राइट। कि भाई सिलेक्ट स्टेटमेंट एक इकलौती ऐसी स्टेटमेंट होती है SQL में जो टेबल से डेटा लेकर स्क्रीन पे शो करती है, राइट। चाहे हम सारा डेटा शो करें, चाहे हम कंडीशनली डेटा शो करें। गॉट इट। तो जब हम डेटा टेबल से रिट्रीव करते हैं, जब हम टेबल से डेटा लेते हैं, तो उस डेटा में जो डेटा टेबल से रिट्रीव होकर आया, उस डेटा में हम मैनिपुलेशंस कर सकते हैं और उस मैनिपुलेटेड डेटा को स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम किसी भी मैनिपुलेटेड डेटा को वापस टेबल में स्टोर नहीं कर सकते, राइट। तो प्लीज कीप इन माइंड दिस थिंग अबाउट सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट। नाउ टेबल, किस टेबल पे हम लोग वर्कआउट करेंगे? तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं, उस पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। कुछ डेटा हमारे पास होता है, कुछ डेटा नहीं होता, कुछ स्टेटमेंट्स बाद में ऐसे होते हैं जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती प्रॉपर्ली। लेकिन हमारे पास एक ऐसी टेबल गिवन है जिस टेबल में जो डेटा है, अगर हम वो टेबल क्रिएट कर लेते हैं तो उस टेबल के डेटा के अकॉर्डिंगली हम हर टाइप की SQL स्टेटमेंट यानी कि सिलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैंने वो टेबल पहले से बना रखी है, दैट इज EMP टेबल, दैट इज EMP टेबल। तो आई जस्ट शो यू टू डिस्प्ले द records of EMP table. If I want to display all the records of EMP table, so the simple select statement I will execute first. I will execute the simple select statement first to display all the records from the EMP table, right? That is select star from EMP semicolon, right? Select star. Star means all fields. Star means all fields, right? This simple select statement can restrict number of fields to be displayed. It cannot restrict number of records to be displayed. This simple select statement, it's a simple select statement without any criteria, or we can say without any condition, right? So if I use the select statement without any condition, without any criteria, right? So this simple select statement can restrict number of number of fields only to be displayed, not number of records, right? For example, look at here. So select star means all fields. Star means all fields. Now, so this is my data, right? In an employee table, I have 14 records in this table, right? So select star from EMP will display these 14 records, the complete records, all records, and I have 8 fields, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That means employee number, employee name, job, MGR, hire date, cell, commission, department number, right? So these are the fields we have in the table EMP. So it will display all the fields and all the records, right? Now, if I want to restrict number of fields, I don't want to display all fields there. I don't want to display, right? I want to display some limited fields. So what I can do, I can again give the select statement, right? So select, instead of star, now I will use field names, the comma separated list of fields, right? The comma separated list of fields, that is, suppose EMPNO comma ename comma job comma salary, right? Now I want these 4 fields only. I want
the details of these 4 fields only, right? From EMP. Select and from are mandatory. These are the keywords, right, of the select statement. Select and from. List of fields is user defined. Table name is user defined. But select and from are mandatory, right? Semicolon, enter. So this is my field name, right? 4 field names, but all the records, all 14 records, 4 fields, but all 14 records. So this is my simple select statement. So through this simple select statement, beta, I can restrict number of fields to be displayed, but I cannot restrict number of records to be displayed, right? To restrict the number of records to be displayed, I have to use where clause. So that we will use later on, right? Now, this is first thing. Next, what I can do with the select statement. Select statement can also be used. Select statement can also be used for basic calculations. For example, select 89 plus 63, semicolon, without any table name. Okay. If I am going to use select statement as a normal calculator, so I don't need to use from clause. In this particular case, from is optional. For this particular case, from is optional, right? From is only used when I retrieve the data from the table, right? Now, select and the calculation, whatever calculation you want to do, right? Again, select 45 into 25 multiplied by 0.35, semicolon, right? So 45 into 25 and then the 35% of the result, that is 393.75, right? Now suppose I want to change this column. By default it will show the calculation in the column, right? In the column heading it will show the calculation, but I don't want to display this calculation. And what should I do? Select, okay, again 45 into 25 and multiplied by 0.35 and calculation, right? Semicolon. So it will display this calculation as a heading. So it will display this calculation as a heading here, right? Now I can perform this kind of a calculation on my fields also, right? My fields. For example, here select suppose what are the fields here? Salary. Suppose I want to display bonus of the employee, the 20% of their salary, right? So what I'll do, EMPNO, select EMPNO, comma, ename, comma, cell, comma, cell multiplied by 0.2. That means 20% of salary. This is my bonus from EMP, right? Here it is mandatory to give the from clause, right? Because here from is mandatory, because I am using field names from a particular table, like this. So this is the 20% amount. Now I don't want to display this calculation here, right? I don't want to display this calculation here. What I want to display,
I want to display a bonus, a field name as a bonus. This column name, column heading should be bonus, right? This field, I don't have this field in a table. I don't have this field in a table. बोनस नाम से कोई फील्ड नहीं है मेरे पास टेबल में, बट अगर मुझे बोनस कैलकुलेट करने के लिए आता है, राइट, क्वेश्चन में, तो हम इस तरीके से बोनस कैलकुलेट करके शो कर सकते हैं. इट्स अ टेम्परेरी कॉलम created by the select statement. I cannot hold this column in a table through select statement, right? तो इस टेम्परेरी कॉलम को हम टेबल में स्टोर नहीं कर सकते सिलेक्ट स्टेटमेंट से. Got it? Now I want to give it name like bonus. So just do it like this. Bonus, right? Cell into point 2 space and then within a quotes bonus, like this, right? So this is the temporary column for this query only, right? This is the calculated value. These are the calculated values, right? It is calculated column, right? And this is the calculation. This is the calculation data, right? So this is the way to use a calculation in a select statement, right? Now next is distinct clause, right? Now what is distinct clause? What is the use of distinct clause? So distinct clause is used to eliminate duplicate values. Distinct clause is used to eliminate duplicate values. For example, select star from EMP, right? तो यहां पे सपोज जैसे जॉब है मेरी, right? Job has repetitive values, duplicate values, right? Department number has duplicate values. Got it? Now my requirement is to eliminate the duplicate values, right? अगर मैं एक कॉलम को शो कर रहा हूं, उसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज मुझे एलिमिनेट करनी है, तो मैं डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज कर सकता हूं. फॉर एग्जांपल, अगर मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन सी जॉब्स हमारे पास हैं नॉन रिपीटेटिव, वो रिपीट ना करे जॉब्स मेरी, राइट? आई वांट टू डिस्प्ले ओनली यूनिक जॉब्स, राइट? आई वांट टू एलिमिनेट द रिपीटेटिव डेटा. तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे? सिलेक्ट distinct job from EMP. It will display unique jobs. That means कि it has removed repetitive data. It has removed repetitive data from the output, right? यहाँ पे मैंने एक सिंगल फील्ड ली और उस फील्ड पे मैं वर्कआउट परफॉर्म कर रहा हूँ, तो उस फील्ड पे जो भी वर्कआउट हो रहा है वो एलिमिनेट करके हो रहा है, कि जितना भी रिपीटेटिव डेटा है वो उसको एलिमिनेट कर रहा है. अच्छा, अगर यही डिस्टिंक्ट मैं स्टार के साथ दूंगा तो क्या होगा, राइट? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम EMP. डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम EMP. स्टार मीन्स ऑल फील्ड्स. अब डिस्टिंक्ट, तो ये क्या एलिमिनेट करेगा? कोई भी रिकॉर्ड, अगर सेम रिकॉर्ड दोबारा रिपीट हो रहा है मेरी टेबल में, तो ये उसको एलिमिनेट कर देगा. अगर कोई सेम रिकॉर्ड दोबारा रिपीट हो रहा है तो ये उसको एलिमिनेट कर देगा. अगर नहीं रिपीट हो रहा है तो वो एज इट इज शो कर देगा. लुक एट हियर, लाइक कंप्लीट 14 रिकॉर्ड्स, right? So it shows complete 14 records, right? Like this. अगर मैंने यहाँ पे कोई भी एक रिकॉर्ड, सपोज अगर स्मिथ का ही पूरा सेम रिकॉर्ड अगर दोबारा रिपीट हो रहा होगा तो वो उसको एलिमिनेट करेगा. अगर ये सेम रिपीट नहीं हो रहा है तो वो उसको शो करेगा, क्योंकि वो रिपीटेटिव नहीं है, सेम रिकॉर्ड रिपीट नहीं हो रहा, राइट? So this is the use of simple select statement, right? Hope you understand the concept of simple select statement.
In next class, I'll teach you the select statement with the where clause and some operators used with the where clause. That's all for today. Stay healthy, stay safe. Please like my video, share my video and subscribe my channel. That's all for today.